ये देखो मेरा अभी लेमन कट लिया, इसका अभी रस। I cut the lemon, now I squeeze and take out the juice of this lemon. This is garlic, so इसका भी स्क्वीज करके इसका जूस निकल लेंगे। फिर ये जिंजर है, उसको भी मिक्सी में डाल के इसको पेस्ट कर लिया। इट नॉट मिक्सड विद दिस ऑल दिस ग्रेडियंट। हार्ट एक्चुअली प्रेशर भी कम होता है इससे। और इसके बाद ये देखिए हनी है, फिर ये एप्पल साइडर विनेगर, ये सारे को पहले हम लेमन 1 कप लेंगे, फिर जिंजर का रस 1 कप लेंगे, फिर लहसुन का रस 1 कप लेंगे, फिर एप्पल साइडर विनेगर इसको भी 1 कप लेके फिर बॉयलिंग करेंगे। सो फर्स्ट वी टेक 1 cup of lemon juice, then 1 cup of ginger, then 1 cup of garlic, and then 1 cup of apple cider vinegar, and we mix it and heat for 45 minutes very slowly, lukewarm हीटिंग। इसको हीट करने के बाद फिर उसको कूल करेंगे, फिर 1 कप हनी इसमें डालेंगे। तो हम धीरे धीरे वो प्रोसेस में दिखाएंगे आपको। फिर हम इसका जूस को निकाल लेते हैं, निचोड़ के squeezing that ginger, take out that juice from the ginger and keep it in the bowl. Again see this one, how I take out that juice. आप लोग देख पा रहे हैं कैसे मैं जूस को निचोड़ के कप के अंदर रख रहा हूँ। फिर 1 कप होने के बाद इसको हम इस बाउल के अंदर रख देंगे। इससे हमारा हार्ट एक्चुअली बहुत ताज़ा रहता है। हार्ट का जो मतलब आफ्टर 40 इयर्स क्या होता है, हार्ट वीक होने लगता है। तो हार्ट को हम अच्छे रखने के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम आता है। दिस इज़ होममेड रेमेडीज। ये आप लोग देख पा रहे हो, अभी मैं लहसुन बोलते हैं, इसका रस को भी मैं निकाल रहा हूँ। नाउ आई एम टेकिंग आउट दैट garlic juice, 1 cup of garlic juice. You can see that.
जिंजर, गार्लिक, लेमन, हनी सब कुछ मिक्स किया हुआ है। यहाँ पर तो दिखा रहा है लेकिन ये पता नहीं कितना असली है कितना नकली है, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने के लिए। ज़्यादातर 40 to 45 एज में क्या होता है, ये देखिए अभी मैं ये इसको नींबू का रस को इसमें डाल रहा हूँ, हो गया। अभी मैं एप्पल साइडर विनेगर इसको अच्छी तरह से छीट लेता हूँ, मिक्स प्रॉपर्ली। देखिए इसको छीट लेता हूँ, फिर इसको हम 1 कप इसमें ले लेता हूँ। Garlic, lemon and apple cider vinegar. Now इसको हम हीटिंग के लिए बैठा देंगे 40 to 45 मिनट्स। ये देखिए इसका छिलका सब, ये देखिए लेमन का कितना सारा निकल रहा है। ये देखिए इसको अभी हम हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। अच्छा हुआ
better to get it empty stock. इसको प्रिजर्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे ग्लास जार में, इसमें ये सेफ रहता है। प्लास्टिक के जार यूज़ करना बेस्ट नहीं है, प्लास्टिक बॉटल इज नॉट गुड फॉर दिस, सो यू हैव टू यूज दिस ग्लास बॉटल। Put in the chair. इसको हम रोज 1 चम्मच करके पिएंगे। सुबह उठ के ब्रश करके पानी पीने के बाद 1 चम्मच करके पीना है बस।